Hello everyone, welcome to lecture number 4 of Theory of Automata and Formal Languages. In the last class we solved a question on deterministic finite automata. I have another question for you. It says design a DFA for a language capital L such that it contains all the strings that always ends with BA. So in the last class we did ending only with B, right? This time we have ending with BA. So I told you that you need to figure out the minimum string that should actually get accepted, right? So what is the minimum string that would get accepted for such a language? It would be BA, right? We don't want anything else, सिर्फ BA आ जाएगा, हम उसे accept कर लेंगे. So let's draw the finite state machine for this particular minimum string. So Q0, right? The initial state on B will go to Q1, right? Now from Q1 on taking A will actually go to Q2 and get accepted. As simple as that. So this is like ending with BA, right? Now let's figure out. So I told you the this determinism actually says that for every state you need to draw the transition for every input symbol that you have, correct? So Q0 B के लिए तो बात कर रहा है, but A के लिए कुछ नहीं बोल रहा. So what we will do, we have to figure out either we will perform the self transition, means वो Q0 पे रुके आगे जाए. So we have to figure it out, right? So if it starts with A, means Q0 कह रहा है कि अगर कोई भी string A से शुरू होती है तो हमें कोई problem नहीं है. Why? Because the constraint is on the ending part, right? So if it starts with A, we don't have any issue. So we added a self loop on it. So Q0 on A will stay on Q0. On B, it will go to Q1. Now, Q1 talks about A, but does not say anything about B, right? So, अगर एक B हमारे पास already आ चुका है, so अभी Q1 के लिए हमें B का decision लेना है, right? So अगर B के बाद एक और B आ जाए और any number of B's आ जाए तो हमें कोई problem नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर एक B तो हमें मिल ही रहा है, इसके बाद अगर कितने number of B आ जाएंगे हमें पता है कि A को लेकर ही वो accept होगा. That means by default वो end किससे हो रहा होगा? BA से, correct है? So we need to write a self loop for this B also, right? So Q1 on B will remain here because हमें पता है कि आगे चल के हमें minimum एक A तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हमारी BA को लेकर के वो string definitely accept हो रही होगी. Getting? Now we have to check for what exactly we want to check for now Q2, right? So Q2 is a very crucial state. We need to understand कि on A what it will do and on B what it will do. ठीक है? तो अगर हमें B आता है, या लेट्स से A के बारे में पहले बात करते हैं, तो B A यहां तक तो ठीक है. अगर हमने A को इधर पे अगर हमने सेल्फ लूप लगा दिया तो क्या होगा कि आपके पास एनी नंबर ऑफ टाइम्स A आने लगेंगे, जो कि हमारी कंस्ट्रेंट नहीं है. हमारा कंस्ट्रेंट है कि एंड्स विद सिर्फ BA से होना चाहिए, राइट? तो अगर एनी नंबर ऑफ A's आएंगे तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है. सो डेफिनेटली द ऑप्शन इज टू कम बैक. नाउ टू कम बैक विच वन वी हैव टू सिलेक्ट, आइदर Q1 और Q0. तो अभी वो कैसे फिगर आउट करेंगे? देखो, अगर मैंने Q2 से Q1 पे A को ले आया तो क्या होगा? B A A A will get accepted, जो कि सही नहीं है ना. डबल A तो आ ही नहीं सकते एट द एंड. सो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बैक ट्रैक करा करके हमें Q0 पर लेकर आना होगा. अभी क्या होगा कि A जब Q0 पर आएगा तो अब आगे जाने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए उसे मिनिमम एक B और A से होकर ही एक्सेप्ट होना पड़ेगा, करेक्ट है? नाउ व्हाट अबाउट B? तो B को यहां लाए या वापस यहां लाए, लेट्स अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ B's आ रहे थे हमें प्रॉब्लम नहीं थी. तो अगर Q2 से भी B यहाँ आ जाएगा तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अगर B यहाँ आ गया तो मिनिमम एक A तो यहाँ बैठा हुआ है हमारी स्ट्रिंग को BA से एंड कराने के लिए, राइट? सो दिस B विल एक्चुअली कम बैक टू Q1, right? Now let's check for any string. If I make it, right, if I make any number of times B, I make any number of times B again, A and then B, and then I write A B A. Let's check for this. So there are 4 A's, right? So it will stay on this loop for B, and then this 2 B's. It will traverse here, go A, and then for B it will come back, and then again for A it will get accepted. So this string is accepting string, right? Let me write a string which might not get accepted. So let's see. So let's see this, huh? So this is 3 times A. So this is A, B. This is A, then B, A, B. Now I'll stay at Q1 only and will not get accepted because this is not ending with
BA, right? So once you construct this diagram, right, it is very important to recheck it by considering certain number of strings and testing your finite state machine if it is correct or not, right? So this was all about the video. If you liked it, please like, share and subscribe. And thank you for watching. I'll meet you in lecture number 5.